आई थिंक लुक इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट क्योंकि ये मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी है और इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर मैं वो टैप ना करूँ तो मेरा लॉस है. फंडामेंटली यू हैड 2021 affected by COVID. Everything spilled over to 22-23. So 22-23 were great years. And then people started thinking that you have to take your chart from 22-23 and take it forward. It doesn't work that way. It's averages. You need to go back 2015. And if you normalize it, what has happened this year is earnings have been weak. And therefore the markets have not performed then. Because we were I think perhaps taking the wrong base of a high growth of 22-23, which was more an overflow from 2021. So you just have to be careful in these kind of things. Having said that, market is flat. I think in our stable we have a few funds which have delivered 10-15% returns yet on a 1-year basis. So is there an opportunity for us to outperform and make good returns for the investor? Yes, there is. That's because of the width and the breadth of the Indian market and how it is structured. So I think, look, India is in a sweet spot. Very long way to go. What I'm seeing globally is large institutional investors earlier had buckets. So the bucket was emerging markets. तो हमारा एक छोटा सा था, पर वो छोटा भी अभी काफी बड़ा हो गया है. बहुत उसमें भी बदलाव आया है. पर अभी क्या लोग बोलने लगे हैं कि बस ये इमर्जिंग मार्केट नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें 25 कंट्री है और अगर ये परफॉर्म करेंगे दूसरा कुछ ले जाएगा. तो इंक्रीजिंगली अभी इन्वेस्टर बोल रहा है कि मेरे को चाइना का सेपरेट मैंडेट चाहिए, मेरे को इंडिया का सेपरेट मैंडेट चाहिए क्योंकि ये मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी है और इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर मैं वो टैप ना करूँ तो मेरा लॉस है. तो द सिंपलेस्ट वे कि मैं इंडिया ETF में डाल दूँ, देन आई जस्ट गेट माई बीटा. बट देयर इज रियलाइजेशन कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई अच्छा फंड मैनेजर है जो समझ सकता है और जो मेरे को नेक्स्ट 10-20 साल लेके जा सकता है तो मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊंगा. और मेरे को ये दिख रहा है. When I go, they're saying, I visit many countries every year. I can clearly see that change in investors and their understanding that, look, US, China are in another level. But in the next 3, then India is catching up there meaningfully. And that's the opportunity.